Good morning, dear students of class 7th A and 7th B. In this chapter on the changing earth, lesson 3 of geography, we have already read about certain forces and now we are reading about certain movements. So, first we read about volcanoes, and today I am sending you my video on earthquakes. So, there are many factors such as volcanic eruptions, movement of the lithospheric plates, or even bomb explosions that can cause the surface of the earth to shake. So, what is an earthquake? The movement of lithospheric plates causing vibrations on the earth's surface is referred to as an earthquake. तो लिथोस्फीयर मतलब लैंड की प्लेट्स जब मूव करती हैं और कुछ वाइब्रेशंस होते हैं अर्थ के सरफेस पे, उन वाइब्रेशंस को हम कहते हैं अर्थक्वेक। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि जो ओशियानिक क्रस्ट है और जो कॉन्टिनेंट्स हैं, you know about mantle, core and crust. So these are the structures of the interior of the earth. तो जो ये प्लेट्स में मूवमेंट होता है इसको ही हम earthquake zone या earthquake कहते हैं. Further, I would like to mention to you that there are many factors which cause the earth to shake. This shaking of the earth's surface is called an earthquake. Even bomb explosions can cause the surface of the earth to shake. The place of origin of an earthquake is called the focus, right? So wherever it originates, it is the focus. The point on the earth's surface which is vertically above the focus is called the epicenter. And that is why there are certain waves which are caused as a result of vibration. These are concentric waves from the focus, right? And these waves are called seismic waves, right? The intensity of an earthquake is maximum near the epicenter, right? So in the picture which we saw, there was one focus, then there is an epicenter, and then the seismic waves, and further there is the seismic waves, and then the maximum effect is seen at the epicenter. Now there are certain types of earthquake waves also given in the chapter, which are primary waves, secondary waves, about which I am sending you a separate video. You have a look at that video. Further in the chapter it is given about measuring of earthquakes, how earthquakes are measured. So there is one instrument, the picture of it has been given in your lesson also. It is called seismograph. A seismo, or you can call it a seismograph, right, is an instrument that detect मतलब पता लगाना, magnifies मतलब बड़ा करना, and record करना किसको, वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ, स्पेशली द अर्थक्वेक्स. तो अर्थ के वाइब्रेशंस को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक्स. तो उनको रिकॉर्ड करने, उनको डिटेक्ट करने, उनको बड़ा करके देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको हम साइज्मोग्राफ कहते हैं. देन रिक्टर स्केल. What is a Richter scale? It is a mathematical formula which determines the strength of waves recorded on a seismograph. Or in simple words, in your chapter it has been given the intensity of earthquake waves is measured on a Richter scale. तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जैसे हमारे पास मान लो हाथ में मेरे ये स्केल है, तो हमारा स्केल कैसे काम करता है, सेंटीमीटर्स मीटर्स में. ऐसे ही अर्थक्वेक्स का भी एक स्केल होता है जो वेव्स की स्ट्रेंथ को पता लगाता है, और उसके बेसिस पर हम ये कहते हैं भाई इतने रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, है ना. तो ये रिकॉर्डिंग सीज्मोग्राफ पे होती है, उसके बेसिस पे रिक्टर स्केल उसको मेजर करके बताता है कितने रिक्टर स्केल पर था. द रिजल्टिंग मेजरमेंट डिफाइंस द एग्जैक्ट साइज ऑफ द क्वेक. तो जितना मेजरमेंट हमने किया उसका रिजल्टेंट हम कहेंगे हाँ इतने साइज़ का वो क्वेक था या वो
भूकंप हुआ था. So this is all about Richter scale, and this Richter scale, an increase in even 1 point on the Richter scale indicates that the force of the earthquake is 10 times greater than the strength of the previous number. हमारा स्केल जैसे होता है 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच का, मान लो हमने एक छोटा सा स्केल लिया, तो अगर एक पॉइंट भी इस रिक्टर स्केल पर, इसको हम रिक्टर स्केल से कंपेयर करें, तो 1 सेंटीमीटर हमारा अगर यहाँ बढ़ता है और उस रिक्टर स्केल पे 1 पॉइंट बढ़ता है, तो इसका मतलब उसका जो फोर्स था अर्थक्वेक का वो 10 गुना ज़्यादा पहली बार से था. इस तरह से उसको मेजर करते हैं. एंड अर्थक्वेक्स ऑफ इंटेंसिटी 6 एंड अबव आर वेरी डिस्ट्रक्टिव. तो अगर 6 से ज़्यादा का स्केल है तो उनको माना जाता है वो अर्थक्वेक बहुत डिस्ट्रक्टिव है. ठीक है, तो इस तरह से एक रिक्टर स्केल काम करता है. ऑल्सो these may sometimes cause landslides, cracks in Earth's crust. They sometimes result in bursting of river dams, blocking of rivers, raising and lowering of sea floors or coastal regions. So these are certain impacts or effects of violent or serious earthquakes. Further, in my next video, I will send you something about the distribution of earthquakes. So today let us summarize what we studied. The movement of lithospheric plates causes vibrations on the earth's surface. These vibrations are called earthquakes. So you got the definition of what an earthquake is. Now the place of origin of the earthquake in the earth's crust is called focus. So this picture has been given in your chapter. So the place where the earthquake originates, it is called, in the earth's crust, it is called the focus. है ना, जहाँ से वो शुरू हो रहा है उसको हम कहते हैं focus. The point on the earth's surface above the focus is called the epicenter. अब इस फोकस के ऊपर जो पॉइंट निकलेगा सरफेस पर हमको जो दिखता है, फोकस हमको दिखाई नहीं देता, वो अंदर अर्थ के अंदर डीप होता है, लेकिन हमको ऊपर उस सीध में जो पॉइंट इमर्ज हुआ सरफेस पे उसको हम कहते हैं एपिसेंटर. ठीक है, तो फोकस के ऊपर जो अर्थ सरफेस पे पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं. द अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ साइज्मोग्राफ एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल. अर्थक्वेक को मेजर करेंगे सीज्मोग्राफ से और उसका मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड का हुआ, उसके लिए फिर एक मेजरमेंट का स्केल होता है जिसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं. So today I am just finishing off here. In my next class I'll send you something about distribution of earthquakes. Thank you. We will continue next.